Now let's talk about fifth paragraph and we'll discuss difficult word meanings extracted from this paragraph first. So first word is antibiotic, which means a medicine that blocks the growth of or destroys bacteria. Second is ointment, जिसका मतलब होता है lotion that is applied externally as remedy for soothing and irritation. ये एक lotion, एक medicine होती है जो कि किसी जख्म पे अप्लाई की जाती है ताकि उसको राहत मिले. Third word is moist, which means slightly wet, नमी वाला या नम. Fourth word is ingredients, which means a component part or element of something, which means ajza. Fifth word is mild, which means not severe, serious or harsh. Urdu में इसे कहेंगे हल्का. Sixth word is rash, which means an area of redness and spots on a person's skin, appearing especially as a result of allergy or illness, यानी सुर्ख दाने. Moving on to explanation of fifth paragraph. अब इसमें किस स्टेप की बात होती है एंटीबायोटिक अप्लाई करने की. एंटीबायोटिक या कोई भी लोशन या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जख्म पे अप्लाई किया जाता है. किस लिए? ताकि जो जख्म है वो मॉइस्ट रहे, नम रहे, सॉफ्ट रहे. ये एक्चुअल में वुंड की हीलिंग प्रोसेस में हेल्प नहीं करता है. इसको लगाने से हमारा जो बॉडी का हीलिंग प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है और उसकी वजह से जो वुंड है, जो जख्म है, वो जल्दी भरता है. और ऑइंटमेंट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स या एंटीबायोटिक क्रीम में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जिससे किसी को एलर्जी हो सकती है. तो अगर आपको एलर्जी होती है या रैशेस होते हैं इस ऑइंटमेंट या एंटीबायोटिक क्रीम को यूज़ करके, तो यू विल हैव टू डिसकंटिन्यू यूजिंग दैट वेरी क्रीम. एंड कीप इन माइंड कि आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना होता. यू आर सपोज्ड टू अप्लाई अ वेरी थिन लेयर ऑफ ऑइंटमेंट और क्रीम ऑन योर वुंड. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. First difficult word from paragraph 6 is harmful, which means causing or capable of causing harm, यानी नुकसानदेह. Second word is unlikely, which means not likely to occur, यानी जिसका इम्कान ना हो. Third word is exposure, which means the state of having no protection from something harmful, यानी खुला हुआ रहना. Moving on to its explanation. So this step deals with covering the wound. अब हम अपने जख्म को किस तरीके से कवर कर सकते हैं? Very common method is of using bandages. Bandages की बहुत सारी टाइप्स आती हैं. कुछ एडहेसिव होती हैं, कुछ एडहेसिव नहीं होती है. एडहेसिव का मतलब होता है स्टिकी. So bandages आपके wound को क्लीन रखती हैं, कवर रखती हैं, लेकिन आपने बैंडेजेस में ही नहीं रखना है अपने वुंड को. जब आपका जख्म इस हद तक, इस एक्सटेंट तक भर जाए कि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हैं, तब आप अपने बैंडेजेस उतार दोगे. यू विल एक्सपोज योर वुंड टू द एयर. अपने जख्म को आप खुली हवा में छोड़ोगे ताकि आपका जख्म जल्दी भरे. थैंक यू.